ओके जी। हॉटेस्ट टॉपिक इंटरनेट पे पिछले कुछ दिनों से जो है वो चल रहा है, जॉर्डन पीटरसन की डिबेट जो है एथियस्ट के साथ शुरू हुई थी। क्रिश्चियन डिबेट विद 20 एथियस्ट, राइट इन द मिडल ऑफ द डिबेट इट चेंज इनटू जॉर्डन पीटरसन वर्सेस 20 एथियस्ट। और फिर उसके बाद कुछ क्लिप्स ऐसे आए, वायरल हुए, और हमें देखने में ये मिला, लोगों ने ये इम्प्रेशन दिया, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भी बनाई उसके ऊपर, और ज़्यादा लोगों ने यही कहा कि जॉर्डन पीटरसन जो है वो ये डिबेट हार गए हैं, या जॉर्डन पीटरसन से क्राउड हैंडल नहीं हुई। और मैं भी बिज़ी था, वीडियो बनाना चाह रहा था, और लेकिन मेरे एक शौक है लेब्राडोर रिट्रीवर का, और एम्प्रेस एक वन ऑफ द पेजेस दैट आई हैव, उसका लिटर ड्यू था पिछले 3-4 दिन में, तो मैं उसके साथ बिजी था। और अब जो है वो लिटर हो गया, बच्चे हो गए हैं, तो मैंने कहा चलो अभी टाइम है, और अब हम घर पे ही हैं, जब तक ये हफ्ता गुजर नहीं जाता तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। मेरा वन लाइनर ये है कि जॉन पीटरसन मेरे ख्याल से मॉडर्न टाइम का एक अच्छा इंटेलेक्ट है, और अपने हिसाब से वो अपने फ़िलासफ़र भी है, और क्लिनिकल प्रैक्टिशनर भी है, टीचर भी है, और पॉडकास्टर भी है। और आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड इन्फ्लुएंसर व्हेन इट कम्स टू सम आइडियाज़ अबाउट द राइटेस्ट कंजर्वेटिव philosophies and the ideas which he is pushing. And I think that's a kind of a confirmation bias on my part कि मेरे आइडियाज़ में भी सी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जॉर्डन पीटरसन जिनके बारे में बात करता है, इसलिए शायद मैं जॉर्डन पीटरसन को इसलिए भी ज़्यादा सुनता हूँ। मेरा व्यू इस सारी डिबेट के बारे में ये है कि जॉर्डन पीटरसन जो है वो शायद डिबेट तो नहीं हारा, क्योंकि ऐसी डिबेट्स में कोई हार जीत तो होती नहीं है। ये डिबेट तो जो होती है गर्मी सर्दी वाली डिबेट थी। और जॉर्डन पीटरसन एक इंटेलेक्चुअल आदमी है, और जॉर्डन पीटरसन ये डिबेट जो है वो इंटेलेक्चुअल फ्रंट्स पे तो मे बी इवन खेल गया हो। अगर 5 राउंड का मैच था तो 2 उसने जीते होंगे, 2 या 3, 2.5 राउंड दूसरी टीम ने भी जीत लिए होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया पे और मॉरल फ्रंट पे जॉर्डन पीटरसन को डेफिनेटली जो है वो थोड़ी बहुत शिकस्त का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पे इसलिए कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस गर्दिश में आ गई हैं, और वो क्लिप्स चल रहे हैं जिसमें कि जॉर्डन पीटरसन की ठुकाई की उन्होंने। और मॉरल फ्रंट पे मैं इसलिए समझता हूँ कि जॉर्डन पीटरसन ने डिनाई किया कि वो क्रिश्चियन है। उसने गोल मोल लफ्ज़ों में जवाब दिया, बट पिछले 1-1.5 साल से जॉर्डन पीटरसन, जब से उसकी वाइफ जो है वो कैथलिक चर्च जा रही है, और फिर उसने रेसल विद गॉड भी लिखी, और वो आइडिया और फिलॉसफी भी उसने याकूब से बोरो किया कि याकूब ने भी खुदा के साथ कुश्ती लड़ी थी, तो उसने कहा कि चलो मैं भी अपनी किताब खुदा के साथ कुश्ती लड़ता हूँ, और मैं उसमें डिफरेंट फिलॉसफीज डिस्कस की हैं। फिर वो जो रोगन एक्सपीरियंस में गया, दूसरी तीसरी पॉडकास्ट पे भी गया, और फिर जब भी उस अपने पॉडकास्ट पे भी लोगों को बुलाया तो अपनी किताब को भी प्रमोट किया। और उसके अंदर जो स्टोरीज़ थी, केन की स्टोरी, एबल की स्टोरी, मोसेस की स्टोरी, फिर एलाइजा के बारे में बातें करना, जीसस के बारे में बातें करना, हेल के बारे में बातें करना, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो क्रिश्चियन फ़िलासफ़ी को लेके उसने प्रमोट करना शुरू किया। अपनी किताब को प्रमोट कर रहा था, या उन आइडियाज़ को प्रमोट कर रहा था, या मे बी ही लाइक्स दोज स्टोरीज एंड ही थिंक्स दैट दोज स्टोरीज कुड बी put into a philosophical perspective, और उन पे बात करके वो ज़्यादा target audience achieve कर सकता है। I don't know what were his objectives, but apparently it seemed like that there was a transition happening in his religious ideas and thoughts, and people started thinking that maybe he has become a Catholic or a Christian, but whatever. He lost that morality battle in that when he was talking to that Danny boy. तो मैं रीज़न्स अगर मैं दूँ इस डिबेट में तो जॉर्डन पीटरसन के डाउनफॉल के रीज़न्स, मेरा ख्याल है जॉर्डन पीटरसन ने जनरेशन जी और उन सारे जो जवान लोग थे उनको अंडर एस्टिमेट किया। जॉर्डन पीटरसन दूसरा मेरा ख्याल है कि जॉर्डन पीटरसन को ये आदत पड़ चुकी हुई है। ही इज़ वेरी यूज्ड टू टॉकिंग टू इंटेलेक्चुअल पीपल, एंड ही थिंक्स दैट पीपल टेक हिम एज एन इंटेलेक्चुअल। ये ज़्यादा बेहतर स्टेटमेंट है।
اس کو ایسے لوگوں سے بات کرنے کی عادت ہے جو سمجھتے ہیں کہ جارڈن پیٹرسن خود جو ہے وہ ایک انٹلیکچوئل ہے اور ایک بڑا سوفسٹیکیٹڈ اور پڑھا لکھا آدمی ہے، اور اس کی آئیڈیاز کو جو ہے وہ رسپیکٹ دیتے ہیں اور اس کو بولنے کا موقع دیتے ہیں اور اگریسولی اس کو کاؤنٹریکٹ نہیں کرتے. ایون ڈاکنز کے ساتھ بھی جب اس کی ڈسکشنز ہوتی ہیں تو ڈاکن بھی اگریسولی اس کے ساتھ بات نہیں کرتا. باقی لوگ تو خیر اس کی رسپیکٹ کرتے ہی کرتے ہیں. تو یہاں پہ وہ ان لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا تھا جو کہ جس کو میں کہتا ہوں کہ امریکہ کی نئی جنریشن جو ہے اس میں رسپیکٹ کا لفظ جو ہے یا ڈگنیٹی کا لفظ جو ہے وہ نہیں ہے ان کے پاس. گیم آف تھرونز میں ایک کیریکٹر تھا ڈینیریس ٹارگیرین. ڈینیریس ٹارگیرین کی جب پہلی شادی ہوتی ہے تو وہ ڈینیریس ٹارگیرین کو ڈوتھراکی لارڈ جو ہوتا ہے وہ ایک گھوڑا تحفے میں دیتا ہے، اور اس کو وہ ان کی زبان نہیں بولتی تو وہ اپنے ٹرانسلیٹر سے پوچھتی ہے کہ ڈوتھراکی لینگویج میں شکریہ کے لیے مجھے کیا کہنا ہے، ہاؤ ٹو سے تھینکس ان ڈوتھراکی، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ دیر از نو ورڈ فار تھینک یو ان ڈوتھراکی لینگویج. میرا خیال ہے کہ اب رسپیکٹ کا لفظ بھی جو ہے وہ جو نئی جنریشن ہمارے یہاں پہ جو بڑی ہو رہی ہے امریکہ میں ان کا ختم ہو گیا. وہ ایج ڈفرینس، ٹیچر، ماں باپ، ان ساری چیزوں سے آزاد ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور جارڈن پیٹرسن نے ان کو نہ صرف انڈر ایسٹیمیٹ کیا بلکہ یہ بھی جو تھی اس نے اس چیز کو بھی جو ہے وہ میرے خیال میں فار گرانٹیڈ لیا کہ جب مجھے ہر جگہ میں جہاں پہ جاتا ہوں تو لوگ مجھ سے میری رسپیکٹ کرتے ہیں. تو یہ بات بھی بیک فائر کر گئی. تیسری چیز یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جارڈن پیٹرسن جو ہے وہ موسٹلی کانورسیشنز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ آئیڈیاز، کمپلیکیٹڈ آئیڈیاز کو سامنے لے کے آتا ہے اور ڈیفیکلٹ وے میں ان کو جو ہے وہ ایکسپلین کرتا ہے. ان آئیڈیاز کو ڈیفیکلٹ ووکیبولری یوز کرتا ہے اور کمپلیکیٹڈ کنجیکچرز یوز کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو سامنے بیٹھا ہوا بندہ ہوتا ہے سننے والا وہ نہ صرف امپریس ہوتا ہے بلکہ وہ ان لفظوں کے اندر ہی پھنس کے رہ جاتا ہے اور ان کے میننگز کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش میں وہ بھول جاتا ہے کہ وہ اس کو کیا سوال کرنا ہے. یہاں پہ جن لوگوں سے اس کا انٹریکشن ہو رہا تھا وہاں پہ وہ لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے جن کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جارڈن پیٹرسن کیا کہتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جن کو یہ کرنا ہے کہ ہم نے وہ کہنا ہے جو ہم نے کہنا ہے. اینڈ دے ور ویری ویل پریپیئرڈ. میں یہ نہیں کہہ رہا، نو ڈس ریسپیکٹ ٹو دیز ینگ پیپل، دے ویری نالجبل، دے نو وٹ they are talking about, and the most important thing is کہ وہ اس پہ somehow اس سارے آئیڈیالوجی پہ وہ بلیو بھی کرتے ہیں، اگریسولی بلیو کرتے ہیں. لیکن جب بلیف کا کوشچن جب آیا تھا ڈبیٹ کے اندر تو میں اس پہ اگر مجھے موقع ملا وہ کلپ چلانے کا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوں. تو جو جارڈن پیٹرسن کے جو لافٹی آئیڈیاز تھے وہ وہاں پہ کام نہیں کر سکے، فینسی ووکیبلری بھی وہاں پہ کام نہیں کر سکی کیونکہ ان لوگوں نے جو اپنا کانسیپٹ تھا، جو اپنا ایجنڈا تھا وہ پش کرنا تھا، اور they were well prepared for that. جارڈن پیٹرسن actually underestimated them. اور میرا خیال ہے کہ جارڈن پیٹرسن اس دن جو تھا he wasn't himself. He wasn't Jordan Peterson that we are used to watching and listening to. He was kind of angry, he was disturbed, maybe there was something at the back of his mind, maybe there's a war, there's a battle with his wife in the morning, he had a fight with his kids, I don't know, maybe something happened to him and he was not in that positive frame of mind. But anyway, these are irrelevant things. So میرے خیال میں یہ چار چیزیں جو تھیں یہ تو تھیں اپنی جگہ پہ. ایتھیس کے پوائنٹ آف ویو سے میں سمجھتا ہوں کہ they were very very well prepared and they knew that they were up against a so-called intellect, a philosopher, a psychologist and a podcaster and an influencer. اور انہوں نے پوری طرح سے تیاری کی ہوئی تھی کہ ہم نے آج اس کو ذبح کرنا ہی کرنا ہے. And they were aggressive, like the way the most younger American generation people are. They are aggressive towards the people, be it the teacher, the parents, the father, the mother, uncle, aunts, grandmother, whoever they are. They don't care about it. کہ اس بندے نے کیا اچیو کیا ہوا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، سوسائٹی میں کہاں پہ ہے، فیملی میں کہاں پہ ہے. They don't care about that. So یہ میرے خیال میں جو تھیں یہ ساری چیزیں تھیں. اور جارڈن پیٹرسن نے ان کو ہیڈ آن لینے کی کوشش کی بجائے یہ کہ وہ ان کو کسی اور طریقے سے ٹیکل کرتا. اور آئی تھنک جارڈن پیٹرسن
with having so much clinical experience and dealing with people and being a teacher, he should be used to dealing with all these kind of obstacles. But I think he was not himself on that particular day. Who lost or who won, I think nobody is a clear-cut winner. But as I said, that Peterson maybe have defended the intellectual ideas very well, but he lost on social media front, and he absolutely lost on moral front, because he was confronting those kids and he was angry and he was denying them, and on top of all that, he denied his Christian faith too. That's how I believe. Things could have been done better. डैनी के केस में जो यंग लड़के ने उसको सवाल किया कि तुम कौन हो, तुम क्रिश्चियन हो, कैथलिक हो, and Jordan Peterson could have answered that question very well, but in the end he did not. He tried to play games. He called him a smart ass and he called him something, but in the end Jordan Peterson was trying to hold the answer back. I don't know what the reasons were. Maybe he was trying to be a mysterious person, like wanting people to keep guessing about his true religious inclinations. Maybe he's not a Christian. Maybe he's on the way to become a Christian. जो भी आइडिया था क्रिश्चियनिटी का, वो जॉन पीटरसन उस सारे आइडिया को उसने डिनाई किया. और इसलिए मैं कहता हूँ कि मॉरल फ्रंट पे जॉन पीटरसन ने लूज़ की ये डिबेट, क्योंकि अगर आप इतने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते हैं और कहानियाँ बताते हैं और मोसेस की स्टोरी बता रहे हैं और कैन एंड एबल की स्टोरी बता रहे हैं, और फिर आगे चल के उसने बिलीफ के ऊपर भी ये कहा कि you die or you live or you die for it and you don't lie for it, and then he did that later. पहले हिस्से में किसी ने जब उससे सवाल किया बिलीफ के बारे में, तो उसने कहा कि you live or die for it and you don't lie for it. And then he did not live or die for his faith or belief, which everybody believes that he was a Christian. Or not only this, he forgot about the Matthew's teaching, कि मैथ्यू में लिखा हुआ है कि खुदावंद ने कहा कि तुम में से जो मेरा इनकार ज़मीन पर इंसानों के सामने करेगा, मैं आसमान पर अपने बाप के सामने उसका इनकार करूँगा. In English we say that whoever denies me in front of people, I will deny him in front of my Father in heaven. So I am nobody. I'm not a mufti, Christian mufti. फतवा देने वाला तो नहीं होता Christian mufti. But I am not saying, I'm not judging him, like, and I'm not issuing a decree on Jordan Peterson, but I think he denied it, and that's my view of it. Or maybe he's not a Christian, and if he's not a Christian, he's not in a denial, or maybe he's not sure who he is. But anyway, this whole situation could have been handled much better. Actually, the boy gave him the opportunity to describe it, and he could have stuck with this Mary's question, like if Mary is worshipped or not in Christian church, and he could have in the Catholic church, and he could have handled this question very well, and this could have all gone in a different direction if he had handled it. But the whole situation was that the boy was very aggressive, and Jordan Peterson just said no to him. और जो जॉर्डन पीटरसन ने वर्शिप के जो 3 पैरामीटर्स रखे थे, उसके ऊपर तो जो दूसरा पैरामीटर था प्रायोरिटाइज करना, और फिर तीसरा था कि सैक्रिफाइस करना, तो मैरी के लिए तो ना तो प्रायोरिटाइज करके भी मैरी जो है वो हाउस हायरार्की में जो है वो टॉप पे तो नहीं बैठती जाके, तो ही कुड हैव आंसर्ड दैट. मैरी के लिए सैक्रिफाइसेस भी कोई ऐसे नहीं किए जाते जो कि वर्शिप के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं. एंड देन देयर वाज दिस पार्ट. तो मेरा ख्याल है कि ये पीटरसन ने ना सिर्फ ये कि इस सारी सिचुएशन को मिस हैंडल किया, बल्कि उसने अपना फेथ भी जो है उसको भी मिस हैंडल किया. दूसरा जो बिलीफ के ऊपर जॉर्डन पीटरसन ने जो बात की कि you live for it or you die for it. That means faith or belief. And then he was told, a classical example वो लेके आया वो जो डिबेटर था, यंग डिबेटर, कि अगर आप जो हैं वो नाची जर्मनी में रह रहे हैं और एक जू फैमिली जो है वो आपकी अटैक में छुपाई हुई, तो will you lie for it or will you die for it?
and Peterson was like adamant that he would not lie, and then he said that he was not interested in answering that hypothetical question. So I think when you say you in your belief system you live or you die for it. This is an ideal situation, and I think it's an intellectual take. The angle is very, very intellectual. It has, and the people that he was dealing with, they're more reality-based people. These are the people who have no idea about having that kind of commitment where you could sacrifice your own life for your faith or for your belief. And the guy came up with an example, like in priorities equation, he said that he prioritized his wife. So if he worships his wife or not, but then you have in the modern time you have these kind of terminologies like foot worship or shivling worship. So there's like a sexual connotation attached to it, which actually is not worship, but it has a carnal or a bodily feeling about all this. But on the other hand, the worship that Jordan Peterson was trying to belief and worship that Jordan Peterson was trying to disseminate or to advocate, that was a totally different idea or concept. I think when you believe and you are ready to die for something, you act like the way Abraham acted in the Bible, like he was willing to sacrifice his son. And to the people that he was talking to, those are the people who don't believe in that kind of story. To them, this is bullshit, that a father is willing to sacrifice his son because he's told by a divine power to go and slaughter his son, sacrifice his son. There are like so many problems if we are looking from the atheist perspective to this whole Abrahamic sacrificial story of Isaac. Like, why would he take his son to sacrifice? Like, number one, this is a child abuse. I think Isaac was only 12 years old, so he was not even told that he was going to be sacrificed. On his way to the mountain, he kept asking this question, like, Barra kahan pe hai? Where is the lamb? And he kept saying God will provide. So he had a faith and a belief, but the boy didn't know what was going to happen to him. So it's not only child abuse, he was doing it without getting consent from his son. And even if a 12-year-old gave the consent, which is the third problem, this is still the underage kid, which could be manipulated. It could be a honey trap for his own son, or it could be a grooming for his own son. So when you say, like, I prioritize my wife, or I prioritize my certain relationship, you still don't worship that person, because the idea of denying your God in the form of divorce, which is happening every day around us, that's not possible. Or you prioritize your girlfriend over your mother sometimes, or your sister, or your other family members. And that doesn't mean that you're worshiping that person, but your belief to die for something or to live for something and not lie for it, that's very, very, very highly placed ideology and philosophy. And this is very bookish. This could be realized in practical life, but I mean, when the time comes, I think people would lie to save lives, their own life or the life of their families. So when Jordan Peterson said that he wouldn't lie or he would not answer to the hypothetical question, I think he did not have the answer to it. And again, it boils down to the same thing. Like, he is used to talking to the people who tend to agree with whatever he has to say. तो यहाँ पे भी जॉर्डन पीटरसन जो है वो थोड़ा ढीला पड़ा, और आखिर में एक और बंदे ने आके बात की कि पुराने नामे का खुदा जो है, the God of the Old Testament, he was very, very violent God. He talked about genocide, he talked about killing kids and women and
men and all that, and how would you justify Christian morality? And Jordan Peterson let it slide, let it slip. Like Jordan Peterson had the very simple answer. A person like me who does not have the intellect of Jordan Peterson, but I know the answer to it, is very simple. We live in the testament of grace and forgiveness and atonement. We live in the New Testament, which is not about violence, and that's why we talk about Christian morality. We don't talk about Christian morality because of the Old Testament. We talk about the Christian morality because of the New Testament. And New Testament is all about forgiveness and love and grace and faith and belief and giving the other cheek to the person who is trying to slap you. So I think that could have been a person like Jordan Peterson. I expected more from him when it came to dealing with that kind of group. But all in all, I would say that he mishandled it. He underestimated it. He is not used to these kind of target audience. He's not used to people being aggressive towards him. And I think there was an element of disrespect which was involved, which is a very common factor when you are dealing with a younger generation of people over here in America. And I think that's where he lost all his grip. But I still have a great deal of respect for Jordan Peterson, but I think that denying Christianity, denying God, denying the very fact that he could have answered all those questions more tactfully and by not pretending that he knows the answers, but he's unwilling to give the answers. I think these are the things which came to his downfall. But Jordan Peterson is such a great philosopher, I think, a psychologist too. His ideologies are really good. He's very good at it, but he has to choose his audience more carefully. That's all I have to say. Thank you very much.